Hey everyone, welcome you all in today's session. So today we are going to talk about another emerging trend, that is robotics. What is robotics? रोबोटिक्स इंजीनियरिंग की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हमें रोबोट के कंसेप्शन मींस पर्पस ऑफ द रोबोट, डिज़ाइन, मैन्युफैक्चर एंड ऑपरेशंस की स्टडी कराई जाती है। एक रोबोट को बनाने के लिए इंजीनियरिंग की कई सारी ब्रांचेस यूज होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन विच इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट प्रोवाइड द पावर एंड कंट्रोल टू द मशीन और रोबोट, mechanical engineering which is used for construction and provide the shape to the robot to accomplish a particular task. Computer science provide the software applications that determines what, when and how a robot does something. And there are many other technologies like nanotechnology, biotechnology, artificial intelligence also included in manufacturing of robot. So robotics is a science of building or designing an applications of robot. And the purpose of robotics is to develop an efficient robot. Now the question arises, what is robot? A robot is basically a machine capable of carrying out one or more tasks automatically with accuracy and precision. A robot can follow the instructions given through the computer programs. Consider the robot structure showing different components of the robot. In this picture, you can see there are multiple components of robots like voice synthesis, emotions, embedded CPU with Wi-Fi, LiPo battery, voice recognition, 2 cameras, switchable head, prehensile hands, Linux operating system, and many more. Now there are some key components which are present in every robot. The first key component is power conversion unit. The working power to the robot is provided by batteries, hydraulic, solar power or pneumatic power sources. Another key component is actuators. These are energy conversion devices used inside a robot, and the major function of actuator is to convert energy into movement. Next key component is sensor. Sensors are one of the prime component of the robot that provides real-time information on the task environment. Another key component is controller. It is a part of robot that coordinates all the motions of mechanical system. And controller also receive an input from the immediate environment through the various sensors. Now there are some types of robot. We have categorized the robot on locomotions. Locomotion is a method of moving robot from one place to another. The first type of robot is wheeled robot. Next type of robot is legged robot. Another is manipulator. And the last type of robot is humanoid, which is behave like a human. Now there are some applications of robot. Robot is being used in industries. Industries में रोबोट कई सेंचुरी से यूज किए जा रहे हैं. Another applications of robot is medical science. Medical science एरिया में रोबोट का यूज सर्जरी जैसे कॉम्प्लेक्स वर्क के लिए किया जा रहा है. जापान में हॉस्पिटल डिलीवरी के लिए हॉस्पी, जिसे पैनासोनिक ने डेवलप किया है, नाम का एक रोबोट सिस्टम यूज होता है. ड विंसी सर्जिकल सिस्टम का यूज सर्जरी के लिए अमेरिका में होता है. नोनो रोबोट एक ऐसा रोबोट है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करके कैंसर सेल्स को खत्म करने की एबिलिटी रखता है. रोबोट इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन मिलिट्री वर्क में भी रोबोट का क्रूशियल रोल है. इंडिया में दक्ष एक ऐसा रोबोट है जिसे DRDO द्वारा बनाया गया है और इसका यूज बॉम्ब डिफ्यूज करने में किया जाता है. साइंटिफिक रिसर्च एंड एग्रीकल्चर में भी रोबोट का यूज किया जा रहा है. नाउ देयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ रोबोट. NASA Mars Exploration Rover mission is a robotic space mission to study about the planet Mars. This is a picture of MER.
Another example of robot is Sophia. Sophia is a humanoid that uses artificial intelligence, visual data processing, face recognition, and also imitate human gesture and facial expressions. You can see in the picture how Sophia is interacting with a human. Another type of robot is a drone. Drone is an unmanned aircraft which can be remotely controlled or can fly autonomously through software controlled flight plans in their embedded system. It consists of onboard sensors and GPS, that is global positioning system. Drones are being used in many fields like journalism, filming and aerial photography. Healthcare, the drone is being used. Another area of drone is being used is search and rescue operation. सर्च एंड रेस्क्यू जैसे ऑपरेशंस में भी ड्रोन का बखूबी यूज़ किया जा रहा है. जियोग्राफिकल मैपिंग, द ड्रोन इज बीइंग यूज्ड. एग्रीकल्चर में ड्रोन का यूज़ कीटनाशक के छिड़काव के लिए होता है. जंगलों में वाइल्ड एनिमल की मॉनिटरिंग करने के लिए भी ड्रोन का यूज़ किया जाता है. सो दिस इज about today's session. If you like this lecture, if you have gained some knowledge from this lecture, please like, share and subscribe this channel. Thank you for watching.